गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चैट विद छाबड़ा। मैं हूं आपका होस्ट ऋषि। सैटरडे का धमाल एंड आई एम बैक विद अनदर फाड़ू एपिसोड ऑफ आईपीएल। आज हम बात करने वाले हैं टू आईपीएल टीम्स की, केकेआर एंड राजस्थान रॉयल्स। स्टार्टिंग द शो विद कैलकाटा नाइट राइडर्स 2012 एंड 2014 के डिफेंडिंग चैंपियंस। इसके पहले मैं शो की शुरुआत करूं, फैंस को मैं बता दूं कि आप हमें इंस्टाग्राम पे लाइव रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। I will add a few fans and show के अंत में we will pick one lucky winner who will get to win an IPL jersey sponsored by our partner Gully. Before I start the show, I will go ahead and add a fan. चलिए देखते हैं कौन है हमारा पहला लकी फैन। हाय, क्या नाम है आपका? हाय ऋषि, मेरा नाम सायक है। चलिए ग्रेट। सो आईपीएल की अगर हम बात करें तो 2012 एंड 2014 चैंपियंस पिछले हर सीजन में हमने देखा है कैलकाटा इधर टॉप 4 और बॉटम 4 में रहती है। इस साल आपके क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या डू यू सी देम विनिंग द आईपीएल दिस ईयर? विनिंग द आईपीएल तो अभी नहीं कह सकते, बट जो उनका कोर ग्रुप है, दे लाइक लास्ट सीजन के एंड तक उनको समझ में आ गया था उनका जो कोर ग्रुप है, जैसे शुभमन गिल एट द ओपन और रसल द फिनिशर और विद डीके, तो उसमें उन्होंने मॉर्गन को ऐड करा कि लास्ट ईयर बीच में ऐसा हुआ था कि जो लीडरशिप वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि दे लैकिंग द डिसीजन मेकिंग थिंग, तो मॉर्गन उस चीज में डीके की काफी हेल्प कर पाएगा जिस फॉर्म में वो है इंग्लैंड की अभी करंट जो सीरीज चल रही है। तो बिल्कुल, आई थिंक इयन मॉर्गन हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट परफॉर्मर्स फॉर इंग्लैंड टीम। अभी जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग्स भी खेली, बहुत बढ़िया इनिंग्स थी। चलिए बात करते हैं केकेआर की। अगर आपको पूछा जाए एक प्लेयर ऐसा जो आपको लगता है थ्रू आउट द सीजन टॉप परफॉर्मर रहेगा केकेआर के लिए? वैसे तो रसल लास्ट सीजन के हिसाब से होना चाहिए, बट जो मेरा पिक है वो शुभमन गिल होगा, क्योंकि 2012 में और 2014 में जब केकेआर जीती थी तो एक स्टेबल बैट्समैन था। 2012 में गंभीर ने बहुत रन बनाए थे, 2014 में मुस्तफा ने बहुत रन बनाए थे कंसिस्टेंटली। वो स्टार्ट दिए थे, मतलब 40-50 कंसिस्टेंटली बनाए थे। मुस्तफा का 2 रिकॉर्ड भी था कि शायद 7 और 8 कंसिस्टेंटली 40 बनाए थे उसने। तो आई थिंक शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर होगा जो टॉप पे खेल के और बाकी टीम उसके अराउंड खेल सकती है। आई थिंक बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने, बिकॉज अगर शुभमन गिल परफॉर्म करते हैं तो दैट ओपन्स द डोर फॉर हिम फॉर द इंडियन क्रिकेट एज वेल। चलिए बात करें अगर हम दिनेश कार्तिक की कप्तानी की। लास्ट ईयर कंट्रोवर्सी रही थी कि एंड्रे रसल उनसे खुश नहीं थे कि ही वाज़न्ट प्रमोटेड टॉप ऑफ द ऑर्डर। वेयर डू यू थिंक रसल शुड बैट, टॉप ऑफ द ऑर्डर या उनको पिंच हिटर का ही काम करने दें? नहीं, अभी जैसे मतलब मॉर्गन और टॉम बेंटन के पिक से ये हुआ है कि रसल पे जो डिपेंडेंसी थी लास्ट ईयर कि रसल और नथिंग वाला जो सिचुएशन हो गया था जब लूजिंग स्ट्रीक में थे केकेआर, तो वो डिपेंडेंसी अब रसल से हट गई है। मतलब रसल इज अ मैच विनर, अपने नाइट पे वो आपको मैच डेफिनेटली जिता सकते हैं, बट मतलब कंसिस्टेंटली वो चीज वो नहीं कर पाएंगे। तो मॉर्गन उस चीज में, मॉर्गन डीके उस चीज में उनकी हेल्प करेंगे, तो फ्लोट करते रहेंगे, बट उतना प्रेशर नहीं होगा। ऑब्वियसली पावर तो उसमें है ही, बट वो प्रेशर नहीं होगा लास्ट ईयर की मुझे चिकन बनाने हैं, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो कोई नहीं बनाएगा। तो वो इस बार ज्यादा खुल के और ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। ओके, चलिए वेल, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन दिस शो। आई थिंक ग्रेट इनसाइट फ्रॉम वन ऑफ द केकेआर फैंस। आई विल नाउ गो अहेड एंड ऐड अनदर फैन टू द इंस्टाग्राम लाइव। हेलो, हाय। आईपीएल की हम बात करें, केकेआर की जर्सी पहनी हुई है आपने। आई कैन सी दोस 2 स्टार्स राइट अबव द केकेआर लोगो। 2012 एंड 2014 के डिफेंडिंग चैंपियन, बट उसके बाद कोई ट्रॉफी नहीं आई है। क्या चांसेस है केकेआर के इस साल आईपीएल जीतने के? इस साल आई मीन बेटर देन लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर we missed a genuine fast bowler who can take wickets in the power play. This year we have Mitchell Starc and Pat Cummins. This year we have Pat Cummins, and also I expect better from Loki Ferguson. So last year में वही बैटिंग ऑर्डर है, और स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास है एन मॉर्गन इन द मिडिल ऑर्डर। जैसे लास्ट ईयर हमें उससे पहले ईयर हमें रिंकू सिंह को खिलाना पड़ता था या फिर शुभमन गिल को लोअर डाउन, तो अभी मॉर्गन आ गए हैं जो कि डेफिनेटली इज गोइंग टू फीचर इन द स्टार्टिंग 11, और वन आउट एंड आउट फास्ट इन द नेम ऑफ पैट कमिंस और लोकी फर्गुसन. सो देयर इज अ बैलेंस. Also, if we need a third spinner,
बिकॉज यूएई के जो पिचेस हैं वो लो ड्राई रहते हैं. जैसे हम 2014 में भी जीते थे तब हमारे पास हर तरह के स्पिनर थे, राइट, जी. लेफ्ट, चाइनामैन, हिस्ट्री, इवन सूर्य कुमार यादव ने भी बॉलिंग की थी. तो इस बार जी. अगर हमें थर्ड स्पिनर चाहिए तो क्रिस ग्रीन इज ऑल्सो डूइंग बेस्ट इन द CPL. ही इज डूइंग दैट मैडन ओवर्स एंड ऑल, सो वी हैव दैट थर्ड स्पिनिंग बॉलिंग ऑप्शन ऑल्सो. So this year we Okay. have a very better chance than last 2 or 3 years. ओके. दिनेश कार्तिक की अगर हम बात करें तो हमने वो मैच देखा था जिसमें बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने 22 रन ठोके थे लास्ट ओवर में. उसके बाद से अगर हम बात करें तो कोई ऐसी मैच विनिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली उनसे. See, from a KKR's point of view, there is one more match against Rajasthan Royals where he scored some 96 or 97. And also there was one match against Kings 11 Punjab where he was extremely angry on the field. That was like कि KKR ने KL राहुल और क्रिस गेल को आउट करने के लिए बहुत चाल किया था, वो उनको आउट कर दिए. उसके बाद लेकिन आउट नहीं कर पाया तो he was very angry on that field, extremely animated, just like Virat Kohli. So I have full faith in him. There has been some bits and bytes performance on him. I like last year he was our highest run getter, close to some 510 I guess. So after Nidahas, yes, there is no bang as such, but I mean when Russell was hitting, Chris Lynn was hitting, Subman came into party, so he was not needed that much because our bowling was not doing that much. So I still have full faith in Dinesh Karthik. He will be back. चलिए, वेल 2 हफ्ते में आईपीएल शुरू होने वाला है. 2 हफ्ते में कहानी पता चल जाएगी कि केकेआर कैसा परफॉर्मेंस करने वाली है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन द शो. इट वाज ग्रेट हैविंग यू. ओके, वेल लेट्स सी हु वी हैव नाउ. सो क्या नाम है आपका, बताइए हमें. विराज. ग्रेट. तो विराज, आपसे बात अधूरी रह गई थी. 2012-14 डिफेंडिंग चैंपियंस, क्या लगता है इस साल केकेआर आईपीएल जीतेगी? हाँ, इस बार वैसे तो बैलेंस आया टीम में, और हमने पहले देर की थी कि शुभमन गिल अच्छा करेंगे ओपनिंग के इसमें. तो इस बार आई थिंक शुभमन विल डू वेल, and we saw that Sunil Narine doing well in batting also. In CPL we saw he hit 2 consecutive 50s against the nice bowlers, so it would be nice. And also seeing forward for Nitish Rana would be doing well, I think. Okay. एंड अगर हम फॉरेन प्लेयर्स की बात करें, ऐसे कौन से 4 प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है प्लेइंग 11 के हिस्सा होंगे? ड्रेयर्स डेफिनेटली, फिर सुनील नारायण, मॉर्गन. ओके. अगर हम बात करें ऐसे स्टैंड आउट परफॉर्मर की आईपीएल में केकेआर के लिए, क्या लगता है इस साल सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर कौन सा होगा? We as a KKR fan we usually tell that Andrew Russell, but I'm looking forward for Shubman Gill this year. किसका नाम लिया आपने? Shubman Gill. Well, definitely Shubman Gill definitely has that aura, and he definitely has that technique to perform as a player. Finals में किसको देखना चाहते हैं आप KKR के अगेंस्ट? I think there are a couple of teams. One would be Capitals. They are having experience and young side, experience of Shikhar Dhawan, Ajinkya Rahane, bringing Ashwin into the side. Also they have spin core of Delhi Capitals is very nice. Sandeep Lamichhane, then Amit Mishra. So it's a balanced team. And also Mumbai Indians. They are having depth in the side compared to all the big hitters like Pollard, Hardik Pandya, Kunal Pandya. And they have bowlers of best quality, Bumrah and Bolt. So will be them. Yes. चलिए, शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच समय देने के लिए. इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो. हाँ, एक सेकंड. जी बोलिए. केकेआर फैंस के लिए मैसेज देना चाहता हूँ. ओके, गो अहेड प्लीज. कॉर्बोल और जीत बोरे. Thank you so much. Thank you. Okay, well, great insight. A small message for the fans as well, and for the team at the end. Guys, आप हमें कमेंट्स के जरिए भी बता सकते हैं ऐसी कौन सी टीम है जो आपको लगता है केकेआर के अगेंस्ट जाएगी आईपीएल फाइनल्स में. आप कैसे कौन से 4 पिक हैं एज अ प्लेयर, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आपको लगता है प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे. यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन ऑल्सो सेंड इन योर रिक्वेस्ट to join us, and few lucky fans will get the opportunity to be on the show. I will now go ahead and add a few more fans. So what do you think are the chances for KKR to win the IPL this year? Sir, they have lost main player Chris Lynn. They have lost spin Chawla. Okay, yes. Piyush Chawla has gone to Chennai Super Kings now. But what do you think? Is KKR a team that can go on and win the IPL? Sir, if Russell fight till last, they can win. Okay. And who do you think will be the top performer for KKR this year? Russell or Narine? Russell and Narine, both West Indies. We both know how good they've been performing in the Caribbean Premier League, especially Sunil Narine.
and one team that you would want to see KKR play in the finals against? RCB. RCB. Okay. Well, thank you so much for joining us on the show. It was great having you. Guys, you can let us know in the comment section आपको क्या लगता है KKR के क्या चांसेस हैं इस साल IPL जीतने के लिए. बहुत बढ़िया टीम है इनकी, कोर प्लेयर्स हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ हार्ड हिटिंग प्लेयर्स हैं. So do let us know in the comment section and I will now add another fan. हाँ जी, क्या नाम है आपका? भावेश सांगा. भावेश. भावेश कहाँ से हैं? गुजरात से हूँ सर. गुजरात. ग्रेट. तो भावेश, अगर आईपीएल की बात करें, क्या लगता है केकेआर आईपीएल जीत सकती है इस साल? जीत सकती है सर, लेकिन मुझे लगता है, मेरे व्यू से किंग्स 11 पंजाब के चांसेस ज्यादा है. ओके, किंग्स 11 के जाता है. चलिए, अगर हम केकेआर की आज जैसे बात कर रहे हैं, ऐसा एक प्लेयर बताइए तो आपको लगता है केकेआर के लिए टॉप परफॉर्मर रहेगा. मुझे लगता है सर क्रिस लिन ज्यादा खेलेगा. ओके. एंड अगर हम बात करें केकेआर की, एक ऐसा इंडियन प्लेयर जो आप बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए? दिनेश कार्तिक. दिनेश कार्तिक. आई थिंक दिनेश कार्तिक हैज बीन हमारे इंडियन टीम का सेटअप का बहुत लंबे समय से हिस्सा रह चुके हैं. कप्तान भी है, तो बहुत मजा आएगा उनको इस साल आईपीएल में देखने के लिए. एक ऐसी टीम जो आपको लगता है केकेआर के अगेंस्ट फाइनल्स खेल सकती है? केकेआर के किंग्स 11 को मैं चाहूंगा. किंग्स 11. चलिए, वेल, लाइक आई सेड, 10 नवंबर फाइनल्स है, पता चल जाएगा कौन सी टीम खेलेगी किसके अगेंस्ट. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. चलिए, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट फैन टू जॉइन अस. Quickly coming to the main topic we're discussing today, KKR's chances to win the IPL this year. Definitely, quite a good chance. If you compare from the last 2 years, they have a good chunk of major foreign players, and they have a settled unit when it is compared from when Gambhir left. So now DK has a good amount of experience with from last couple of years of being handling the captaincy as well. So yeah, there were bits and pieces where there were a rift between DK and Russell, but now I suppose both Russell has his own metal. He has proved, and so has DK. And now coming in with Owen Morgan, he can also help you in his expertise because he has led England to that magnificent final in 2019 World Cup to win the and then again the likes of Nitish Rana, Shubman Gill. So yeah, it's a complete good team. Let's see what they make it out of. Now, a very valid point that you said. Andrew Russell has proved his mettle, but what a lot of people would want to know is, big names in the KKR camp. A lot of youngsters playing as well. So a lot of eyes would be watching Dinesh Karthik, how he handles the captaincy this year. What do you think? So I've been following this tech segment from last 40 minutes. Everyone has been talking only about the batting and the Shubman Gill, and of course I'm a huge fan of Shubman Gill. He comes from Yuvraj Singh's academy, and I as in not academy but same school of friends, and I'm a huge fan of Yuvraj Singh. So nobody has been talking about the fast bowlers, the Indian fast bowlers who were in the light, like Shivam Ravi and Kamlesh Nagarkoti, and they have been back fit again. So along with Prasidh Krishna, these are two good bowlers, and the fourth bowler would be Sandeep Warrior, Kerala guy, who was traveling along with Avesh Khan and some other bowlers as a net bowler for Indian team as well. So if you see, this is a good mix along with Kuldeep Yadav as a lone spinner, and then Nitish Rana can also chip in along with Sunil Narine, of course. So these 3-4 fast bowlers, it would be again with Kyle Mills has also joined the KKR think tank as a bowling coach, along with David Hussey as well. So now it's a good mix of support staff as well, because how playing 14 games at a stretch would be very difficult. Not everyone would be as fit as they would have been in India, because the humidity, the temperature would be very different what it is in UAE than India. So let's say it would be a mix of 3 players, 2 players again and again changing and revolving and rotating, and then let's say if they qualify for the final round, or let's say the final 4, they will have to pick up their best 2 for the remaining the business end of the tournament. Yeah, well, discussing how attacking Sunil Narine has been in the Caribbean Premier League. We've seen him, going all guns blazing at the beginning. Correct. Who do you think should be the opening pair for KKR this season? Well, so I'm an ardent follower of cricket, and I believe in what Harsha Bhogle says most of the time. He says, if I have my best player in top 3, I will let him go all guns blazing, because as much exposure he gets, as much runs he will get. That's why Suresh Raina, Rohit Sharma, Virat Kohli have all been very successful in their respective teams. So I would like to have a righty-lefty combination along with Shubman Gill with Sunil Narine, and then at number 3 you can have Nitish Rana, and then respective Owen Morgan or / Tom Benton, depending upon righty-lefty or how team spinners are in their position. Then DK, Russell, Pat Cummins also can chip in.
And there's also one guy whom we are forgetting is Rahul Tripathi. He was a wonder guy for Rising Pune Super Giants when he was playing under MSD. So he can also be a handy batsman, and he can also bowl some leggies if I am not wrong. So yeah, they have a good mix. Even they have Sudesh Lad now, which have been he's a stalwart from Mumbai Ranji team. So he got let's say a glimpse of one or two players we played when he played for Mumbai. He started off he debuted with a 6, I suppose, and a leg side flick over that match, I suppose. Would that be right to say? Like you are an ardent follower, so I don't, correct me if I'm wrong. Okay, so you brought MS Dhoni in the conversation. Rahul Tripathi played under MS Dhoni in the Rising Pune Super Giants team. Very important for Dinesh Karthik to perform this year, because with MS Dhoni retiring, that means an open slot for a wicket-keeper batsman. How important do you think the IPL is for Dinesh this year? So of lately, if you see, DK has been contributing so very much well in T20s. Let's say that Nidas Trophy, as you mentioned, of lately that was a bang. But let's say we should be very accepting that we have not been giving him his credit, right? Yeah. We see that you can have, let's say, everyone is focusing on a junior, or let's say on younger guys, Manish Pandey, Rishabh Pant, Krunal Pandya. Even now we have Surya Kumar Yadav in the scheme of things as well. Harvinder Singh has been raising questions like, why is this guy not coming in? Of course, selectors have their own scheme of things, but DK, as we rightly said, he has that element of doubt. He has that element of mettle to prove it again, and he has been a veteran. He has been playing with Tamil Nadu as a captain, and then 2003 was, so MSD and DK were the only two members in 2019 World Cup team who were there in 2007 thrashing, which happened when we lost to Bangladesh. Yes. So they were the only two common players who have been there stable from last 12 years. So DK, he has proved himself, but we have to be accepting that let's say every Indian fan has never given him credit. If you see in the semi-final, you cannot drop in a player at a semi-final level of a World Cup to play and express himself without giving him a game at the back end, or let's say in the group stage. So, of course, we cannot judge him. That was his last contribution to the Indian team, if I remember. Yes. Well, it was great talking to you. Thank you so much for taking out the time and joining me on the show. Thank you so much. Okay. Well, that was some great insight, and it was great talking to another fan. Okay, guys, I will be taking last 2 requests before I end this section. Make sure that you send in the request. 2 more fans request I'll be taking now. Hi, sir. Hi. सबसे पहले तो अपना नाम बताइए हमें. Parth. Parth. How old are you, Parth? 13. 13. Great. Another teenager on the show. आपको क्या लगता है? Will KKR win the IPL this year? Yes, they can win the IPL because they have nice batting order and bowling order also. Okay. Shubman Gill is there, DK is there, Russell is there. Cummins also can bat well because he has bat with Delhi Daredevils at 2017. Okay. So they can win this IPL. They have 99% of chances to win IPL this time. Okay. And who do you think has the 1% chance winning then? They have many teams, but MI also have MI 1% or 2% because they have batting order well, but the bowling order is too less because the Malinga is out of IPL this time. Yes. And they have called James Pattinson. So Dubai is a spin pitch, though. So they have to call spin replacement. So they have called James Pattinson. Okay. And who do you think will be the best performing player for KKR this season? Pat Cummins. Pat Cummins, even though he's a fast bowler, do you think he'll be performing really well in Dubai pitches where spinners get more support? Yes, he can play because in Dubai in afternoon matches, they also said that the faster balls also they can bowl, so they can win there. Well, that's a great point you've made. And who do you think will be the best performing Indian player for KKR? Shubman Gill. Shubman Gill. Well, we all very eager to watch Shubman Gill perform this year. Hopefully, it'll open the doors for him for the Indian cricket team. Well, thank you so much, youngster. It was great chatting to you on the show today. Okay, that was another young kid joining us on the show. Well, I will now go ahead and add one more fan. Well, talking about IPL, assuming that you're a KKR supporter, what do you think are the chances for KKR to win the IPL? There is maximum chance to win this IPL because in 2014, few of the matches have been in UAE. And in 2014, they have been the champions also. Yes, a very interesting point that a lot of fans have missed. 2014, we played a very few games in Dubai, and then we'd moved the IPL back to India.
talking about, KKR, who do you think will be the top performing international star and Indian star for KKR this year? International, I think Sunil Narine, because he has a good strike rate, and spin, he's a spin bowler. And Indian, obviously Shubman Gill. Shubman Gill. I think a lot of fans are, counting on Shubman Gill this year. Well, it's going to be a lot of pressure on him. What do you think, KKR as a team has different from other teams, like an X factor or something like that? Pat Cummins is a good bowler. Okay. Andre well, definitely Russell a world class player. Yes. Andre Russell is a good hitter. Okay. And, one team that you will pick to play KKR in the finals? MI? Okay. Defending champions. Well, they definitely will be hoping to make it to the finals. A lot counting on them as well. Thank you so much for joining us on this show today. It was great having you. Well, it's always great talking to female fans on this show. Well, guys, इसी के साथ हमारा आज का first segment comes to an end. The segment where we were discussing KKR, Kolkata Knight Riders. बहुत ही अच्छा insight बहुत सारे fans ने हमें दिया. A lot of fans feel that Shubman Gill should be the top performing player. Do let us know in the comment section what you feel. हमें अपने insights दीजिए. Talking about the lucky winner, आज के lucky winner बहुत difficult choice थी, but I will go ahead with two fans. I'll make an exception this episode. Singh Star 12 and Path Games 80. So the Bharat Army team will get in touch with you too to take down your details. And उसी के साथ KKR का segment यहीं खत्म होता है. All those Rajasthan Royal fans who want to be on the show, आप हमें फिर से join कर सकते हैं 8 बजे. In about 1 hour's time from now, I will be back with another segment of Chat with Chhabra, where we will be discussing Rajasthan Royals. Thank you so much and take care.